Yeah. Thank you so much, ma'am, for joining. And we welcome everyone present here on this day. It really is auspicious for us, the first ever virtual meet in 2020-21. We welcome our respected visionary, the principal ma'am, the torchbearer of our Kamala Nehru Public School, Miss P.K. Dhillon, Principal Administration and Innovation, by the students of grade 1, 2 and 3, the students, parents and teachers on this day, 16th of April 2021, Friday. Thank you, children all and parents, for joining in. Ma'am, we have been waiting for you. Let me introduce her once again. She is principal since past 26 years. She is MSc Physics B.Ed gold medalist. Wow! Well traveled and well read. Visited 14 countries. Globally validated master trainer on 21st century core skills by British Council UK. British Council School Ambassador, Microsoft trainer and fellow, Adobe Education Leader, Wakelet Ambassador, pioneer in mapping the entire school K-12 curriculum with United Nations 17 SDGs. The list is never ending, children and parents. We of course know our respected principal ma'am truly from the heart itself, and definitely we have been waiting, and children, you should have logged in much more well before on time. We lost some precious moments with ma'am. Never mind. Thank you so much, ma'am. Thank you for joining us. Before we begin, may we start with a prayer, ma'am, with your permission? Yes, Sharda, please go ahead. Thank you, ma'am. I request Hina ma'am to start the prayer, please. Yes, thank you so much, Sharda ma'am. Good morning, respected principal ma'am, vice principal ma'am, respected parents, and all my lovely students. Today, we are here for celebrating the day of togetherness to be part of KNPS family. So I will request my whole KNPS family to join our hand and close our eyes and feel the presence of Almighty everywhere, every time with us. Let us recite Ekankar mantra. Ekamkar Satnam Karta Purak Nirpaw Nirvair Akal Murat Ajuni Sebham Gur Prasad Jap आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. Now I will request Harveen Kaur from grade 3 to pray to Almighty on the behalf of all students grade 1 to 3. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you so much to Hina ma'am and Harveen Kaur for praying to the Lord Almighty on behalf of all of us. Ma'am, may we please request you to address all of us? Thank you. Good morning, my wonderful gems, my beloved stars, the students of grade 1, 2 and 3. Good morning, my great teachers, the mentors in the classroom, the change makers in the classroom. और मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल and namaste to all the parents who are present over here. Thank you so much for joining today's meeting. दिल करदा सीगा कि मैं सारे नाल गलबात करा.
ऐसा लग रहा था कि मुझे अब नया सेशन शुरू हो गया है, तो शुरुआत में तो मिलना जरूरी होता है, और इसीलिए सभी बच्चों से मिलना चाहती थी और इसीलिए सभी पेरेंट्स से भी मिलना चाहती थी. So thank you so much, my beloved students, all of you are there. Thank you so much, dear parents, you all are there. Today is an important day. Why is it important? We're talking about our children. Teachers, बच्चे, parents सारे मिल गए हैं और आज हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं. हमारे बच्चों का आने वाला साल कैसे होगा? Would it be similar to what it was last year? पिछले साल जैसा होगा कि फर्क होगा? क्या बच्चे हम सब स्कूल जा पाएंगे, बच्चे भी, टीचर्स भी, क्या हम सब स्कूल जा पाएंगे इस साल? पता नहीं, अनसर्टेनिटी है, नहीं मालूम क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, कल क्या होगा, किसी को नहीं पता, लेकिन उस मालिक को, उस ईश्वर को पता होता है, उस वाहिगुरु को पता हैगा कि कल की होना हैगा. What we can do is we live in the present. हमने आज में रहकर जीना है. आज क्या है चैलेंज? आज चैलेंज हमें कोविड का है. आज चैलेंज है कि बहुत सारा इन्फेक्शन फैल रहा है. आज चैलेंज है कि बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हैं और बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है. हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, बहुत परेशानी है. क्यों बता रहे हैं हम अपने बच्चों को? आई एम टेलिंग द स्टूडेंट्स बिकॉज दे नीड टू रियलाइज. बच्चों, आपको समझना पड़ेगा कि आपसे बढ़कर प्यारा हमें कुछ नहीं है जिंदगी में. हमें आप बहुत प्यारे हो. एज टीचर्स वी लव यू. एज पेरेंट्स हम अगर मम्मी पापा की बात करें, वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं. तो अगर वो कहते हैं कि बाहर नहीं जाना, अगर वो कहते हैं कि मास्क पहनना है, अगर वो कहते हैं कि हैंड्स को सैनिटाइज करना है, तो हमने ये सब कुछ करना है. पिछला साल वॉज अ टफ ईयर. बड़ा मुश्किल साल था. हम सब घर में बैठ के पढ़े और हम लोगों ने लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी की. जितना अच्छा अपने स्कूल में पढ़ाई हुई है, शायद ही किसी और स्कूल में पढ़ाई हुई है. सो बच्चों से पूरा अटैचमेंट. किसी एक बच्चे ने अपना माइक अनम्यूट किया हुआ, प्लीज इसको म्यूट कर दीजिए बेटा. पहले अपन सब बात कर लें, फिर उसके बाद आप सबकी बात बारी बारी सुनेंगे. पिछला साल तो चैलेंजिंग था, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, गॉड्स ग्रेस, वाहिगुरु दी मेहरबानी रही और हम लोगों ने अपने पूरे साल की पढ़ाई करी. हमारा साल बेकार नहीं हुआ, हमारा साल सक्सेसफुल रहा है. हम सब लोग अगली क्लास में आ गए. अगली क्लास में आने की खुशी की बात ही कुछ और होती है. सेलिब्रेशंस होते हैं, एक साल बड़े भी हो गए, अगली क्लास में भी आ गए. सो थैंक यू सो मच. मेहनत भी आपने बहुत करी. टीचर्स ने तो बहुत 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 मेहनत करी. उन्होंने इतना प्यार आपको दिखाया, इतने मुश्किल समय में भी उन्होंने अपना गुस्सा नहीं किया. एक इतने पेशेंट टीचर की तरह. कभी हम भी नाराज हुए, कभी पेरेंट्स नाराज हुए, कोई भी नाराज हुए, फिर भी उन्हें मुस्कुराते हुए, धीरज रखते हुए बातें समझाएं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है. तो उन सब टीचर्स को सैल्यूट करती हूँ, उन सब पेरेंट्स को सैल्यूट करती हूँ जो एक पहाड़ जैसी ताकत बन के स्कूल के पीछे खड़े रहे कि नहीं, आप पढ़ाइए, हम आपके साथ हैं. सब बच्चे छोटे थे, कोई मम्मी पापा की गोदी में बैठ के पढ़ता था, किसी की मम्मी पास में बैठ के बोलती थी कि चलो ध्यान दो. ये सारा देखते देखते एक साल निकल गया. अब हो सकता है कि ये साल भी ऐसा ही हो, क्योंकि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आ गई है. कहते हैं थर्ड वेव भी होती है, पर लेट्स होप कि कोई ऐसी कुछ चीज ना हो. अगर सेकेंड वेव है और अगर हमने इसी तरह से पढ़ाई करनी है, हमने रिमोट लर्निंग ही करनी है, तो हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. अगर हम बार बार गुस्सा होंगे, नाराज होंगे और कहेंगे दिस इज फूलिश, आई डोंट वांट टू डू दिस, व्हाई शुड वी सिट एट होम, व्हाई कांट वी गो टू द स्कूल, ऐसा नहीं हो सकता ना बेटे. जो हो सकता है उसको हमें खुशी खुशी मान लेना है. अदरवाइज हमारे दिमाग में परेशानी होगी, हम इरिटेटेड रहेंगे, हम गुस्सा करेंगे, हम झगड़ा करेंगे. तो हमें शांति रखनी है. बहुत अच्छा खाना पीना खाना है, सिर्फ घर का खाना खाना है, पानी भी पीना है,
अच्छे से पीना है, एक्सरसाइज भी करनी है, स्किपिंग करिए घर में, रस्सी टप्पो घर दे विच, जॉगिंग करिए घर में, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, पूरा दिन नहीं बैठना। जब आपकी फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता है, म्यूजिक डांस का होता है, उसको ज़रूर अटेंड करिए, उससे आपका ध्यान हट जाता है और वो एक एंटरटेनमेंट हो जाता है आपके लिए। आपकी जो वेल बीइंग कॉल्स है उसमें आप अपने दिल की बात अपने टीचर से करिए कि मैडम मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, या मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा, आज बहुत मज़ा आया। जो भी बात करनी है, आपका परिवार है, टीचर आपका परिवार है, स्कूल आपका परिवार है। जब आपको लगता है कि प्रिंसिपल मैडम से बात करनी है तो अपने टीचर से बोलिए, मैम उनको वेलबींग कॉल में बुलाइए या एक सबके लिए एड्रेस करा दीजिए। आई विल ऑलवेज बी देयर विद ईच वन ऑफ यू। और ये जो चैलेंजिंग टाइम होता है, जो मुश्किल टाइम होता है, उसमें अगर एक बहुत सुंदर टीम बना ली जाए तो बहुत अच्छा रहता है। So today I have come to congratulate you for moving to the next class, to deliberate and discuss what the future would be, maybe like, and how the last year went, and how we all were a strong team, and how we actually traversed this path which we never knew. हमें नहीं मालूम था कोरोना होता है तो क्या करना होता है, लेकिन अब आप 1 साल का आपको एक्सपीरियंस है कि कैसे पढ़ाई करनी है रिमोट लर्निंग में। 1 साल का सब टीचर्स को एक्सपीरियंस है कि कोई बात ही नहीं है, पढ़ा लेंगे बच्चों को, टीचर्स पढ़ा लेंगे, we'll make the lessons again, no problem. That's what they say. So all of us are experienced by 1 year. All of us are strong and all of us are sturdy now. We are not like last year कि पता नहीं कैसे पढ़ना है, सबको पता है। And if we look at if we look at our experience, children, then we also know that we have learned so much to dance. We have learned so many IT skills. कैसे लैपटॉप यूज करना है, मोबाइल यूज करना है पढ़ते वक्त, how to go in for chat, how to use various tools. Flipgrid में how can we record our voice, how can we use Kahoot. We have been empowered now. अब तो ये साल तो बहुत आसान हो जाएगा because we really have learned a lot. But then let me tell you, we're going to learn more IT skills in this year also. Whatever you have learned earlier, that we'll practice, but we'll learn some more tools this year also. So as long as we are there at home, we are safe and secure. We are not going to take risk of calling the children to the school. We are not going to go for hybrid learning, which says that for 1 week, half the class would be there in school, and for the other week, half the class would be there in the school. Half would be in school, half would be at home. Teacher would be teaching from the school to the children who are there in her class and the children who are there at home. ऐसा हम अभी नहीं करेंगे. हाइब्रिड लर्निंग हमने अभी नहीं करनी है. क्यों नहीं करनी है? जब तक हर टीचर को वैक्सीनेशन नहीं लग जाता, जब तक वैक्सीनेशन बच्चों के लिए भी नहीं आ जाता, जब तक सब पेरेंट्स को नहीं लग जाता, जब हर बच्चा, हर पेरेंट अपने स्कूल का वैक्सीनेटेड हो जाएगा, तब जाके हम अपना स्कूल शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं. लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस. आप हमारे लिए बहुत प्रेशियस हो, इसलिए ये प्रिकॉशंस तो हम लोग लेंगे. और आई एम श्योर पेरेंट्स भी सब इस बात के लिए अग्री करते हैं कि वी शुड टेक सम प्रिकॉशंस टिल एवरीथिंग इज क्लियर, द पिक्चर इज क्लियर. वी शुड नॉट बी स्टार्टिंग स्कूल. स्कूल्स मेनली क्यों होते हैं? स्कूल्स में आके आप पढ़ाई करते हैं, you know how to deal with your friends, social norms क्या होते हैं, सोसाइटी में जाना है तो how to listen to each other, किसी पे गुस्सा नहीं होना, we have to stay lovingly and treat each other with lots of respect. वो सब है, वो हम लोग वर्चुअली करते हैं थोड़ा बहुत. इन द सेंस कोई बच्चा बोल रहा है तो वी से ऑल राइट, वी डोंट फाइट विद एवरीबडी. इन चैट विंडो वी डोंट गेट एंग्री एट ईच अदर. वी आर प्रैक्टिसिंग सम सोशल नॉर्म्स, बट वी आर प्रैक्टिसिंग इट वर्चुअली. All right, or since this is the first year when the children are staying for 24 hours with the parents, we've just completed now to nearly 14 months of staying at home. So I'm sure बहुत अच्छी relationship बच्चों और parents में आ गई. बच्चे अपने parents को तंग नहीं करते होंगे. Develop a new habit of reading books. आप बुक्स खरीदिए, मार्केट से मंगवा लीजिए, ऑनलाइन खरीद लीजिए और बुक्स रीडिंग करिए. स्टार्ट गेटिंग सम ड्राइंग बुक्स और कलर्स, ड्राइंग करनी शुरू करिए. Put a music and start dancing. If you don't like to jog, if you don't like to do some outdoor exercise, तो आप घर में म्यूजिक लगा के डांस करना शुरू करिए. लेकिन खुली हवा में ज़रूर आपकी खिड़की दरवाजे आपको थोड़े बहुत खोलने चाहिए. अगर सड़क पे नहीं जा सकते, you can't go to the neighborhood park or on the road, then you should go to your rooftop. अपनी छत पे जाओ, घर की छत पे जाओ
और वहाँ पे आपको ऑक्सीजन ज़रूर मिलनी चाहिए. ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं. अब विंटर्स तो निकल गए हैं, समर्स आ गए, तो थोड़ी बहुत खिड़कियाँ तो हम खोलते ही हैं. So make sure you open the windows of your house, from where some fresh air, morning air can come. In the evening it can come. When it is hot you want to close it, it is all right. So exercising, right food, right behavior, lots of drawing, painting, lots of jumping, lots of skipping, and lots of listening to the parents, eating the right food, that will help you to live a very good life. And then make sure whatever homework the teachers are giving, we should do that homework. When we move from one class to another, we should know all that is there to learn in one class, because learning is a continuous process. एक क्लास में पढ़ा, वो फिर अगली क्लास में उससे थोड़ा सा और बढ़ के पढ़ते हैं, and उसके बाद वाली क्लास में और पढ़ते हैं. So my concern is that you should be wonderful at home, wonderful in school, and be great student. And on behalf of the school, and on behalf of the teachers, I assure that we'll be those patient, loving teachers जो हम पिछले साल भी रहे, इस साल भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे, उतना ही ध्यान रखेंगे. And you can always connect with your teachers and tell them what problems you have, so that we can sort out the problems. You have got a wonderful coordinator, Sharda ma'am. She really understands and she explains everything to all the parents. Parents की वो बात सुनती हैं, फिर वो पूरा completely समझाती हैं, ऐसा करना है तो क्यों करना है, ऐसा हम नहीं कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते. She's got lots of experience in the school. वो स्कूल की पॉलिसीज को जानती हैं, स्कूल को सब कुछ अंडरस्टैंड करती हैं. उसके apart from the coordinator, you've got wonderful teachers. All these teachers have put in some years in the school. सबने एक साल तो पक्का आपके साथ spend किया है ना, when they were there last year. And some teachers are the same who were teaching you last year. They have been moved along with you in the next class, so that the understanding could be very very good. But for one or teacher जहाँ change करना पड़ा. So keeping all these factors in mind, I take this opportunity and pray to Lord Almighty कि God bless each and every child, and God bless all the teachers who are supposed and who are taking care of these students, and God bless all the parents who are lovingly taking care of their lovely children at home. पूरे वक्त उनका ध्यान रखते हैं, फिर भी they keep their cool. टेस्टिंग टाइम तो सबके लिए है, आपके लिए, हमारे लिए, बच्चों के लिए. सो विद दिस आई प्रे टू लॉर्ड ऑलमाइटी कि हम सबको ब्लेस करे, हमारे सबके घरों में शांति हो, और हम सबके घरों में गुड हेल्थ हो और हैप्पीनेस हो. ऑलराइट. और स्कूल पूरा ध्यान रखेगा, हर किस्म से ध्यान रखेगा, पढ़ाई में, सब कुछ में, जैसा भी चाहो. Now I find there are some hands which have been raised. So Sharda, you can take over from here and see which child or which parent would like to ask some questions, so that I am there to answer, please. Sure, ma'am, definitely. Thank you so much, ma'am. And indeed, those are wonderful words of appreciation for all of us, for our students, our parents, our educators, vice principal, ma'am, and the whole school. And yes, definitely we are under your umbrella and your guidance, and we are so happy to have been here. I don't think there could be a better place than Kamala Nehru Public School for our lovely children, at least in this pandemic. I can vouch for that. Yes. And I agree that all our parents are also going to agree with the same, because the amount of work everyone has put in is really commendable. And we have parents, please believe me. I don't know how do I make you people believe, but each and every aspect is being taken care by ma'am. We have any doubt, any concern, any issues, we just approach her. Ki ma'am, what to do? What are we going to do? How are we going to do? And we have never received a negative reply. That's the reason we all are here. That's the reason it keeps us going, even in this pandemic. Every day in the morning we get up and say, no, we have to do something different. We have to do something new. And that motivation comes to us from the person you know who I am talking about now. She is our respected principal, ma'am. So here we take the opportunity of welcoming everyone who's raising hand one after the other. So we have Harpreet Singh. Harpreet, bete, 3B, I understand you are in 3B. If your parents are there or if you want to ask anything, please unmute. Yes, ma'am. Good morning, principal ma'am. Good morning. My name is Harpreet. Yes. And
My father is doing hard working for me, and my is cycling and play cricket with my friends and siblings. My strengths are I am hard working, positive attitude. I am experienced student with my experience and passion. I believe I could be a great leader. I promise to do my best, increase students' interest in the school. Thanks. Thank you, thank you. Tell me, Harpreet, why did you not switch on your video? Up. Now switch on your video and say hello. Okay, all right. Now, okay, God bless you. God bless you. Hi. Oh, all right. God bless you. And thank you so much. Good morning. And we can have the next speaker now. Who would like to say? Thank you so Yes, much, Harpreet, yeah. for the one. Okay, children. Oh, what is this happening? I know these all are wonderful kids. You know what? I said hello to Harpreet. The person who speaks raises the hand. That particular child is going to say hello, right? Others are going to be quiet and wait for their turn to come, please. Yes, Sharda, over to you. Thank you, ma'am. Second hand raised by, I suppose it is Krishna, new admission student. He is logged in with a guest ID. Krishna, please unmute your mic. Krishna, you have logged in with Rahul Kumar Shah ID, guest ID. Okay, he's facing some issues, I suppose. Maybe you can unmute later or let your class teacher know, bete. And we have Baneet Kaur. Good morning, ma'am. Good morning. My name is Baneet Kaur. I study in second B. I love my school. I miss my teachers and my friends. Yes, ma'am. I am Krishna. My favorite session is online. I have online classes and I love activity aunt. Thank you, Baneet. Thank you so much for all that you have shared. And I'm so glad you liked the activity period. We should enjoy, we should dance, sing, do everything. God bless you. I can speak. Thank you. You will have to raise your hand, bete, because we are calling turn wise. And children, yes, ma'am is here. I would like to inform if any parents are there, they would like to express their thoughts and feelings, or you want to ask any specific question, most welcome. And children who want to wish good morning and all, kindly write that in the chat window. Yes, ma'am is going through the chat window and she's so happy to receive the Adobe cards also there. I understand. I saw the thumbs up also. I've seen everything. Thank you so much, ma'am. So, good Seerat Kaur, it's your turn, bete. Ma'am, I want to tell you, ma'am, can you please open the school? I really like to go to school. Yeah, Gurseerat, I wish we could open the school. The government of Punjab has said that all schools need to be closed. Yes, all right, ma'am. that is one thing. And only the government has given some permission
to conduct the practical exams of grade 12. So they wrote a letter that you can conduct practical exams, the CBSE practical exams. Otherwise, the school is closed. We are not supposed to go to the school. We have to be at home. Lots of infection is there around because of COVID. So we need to be at home. It's a sort of a lockdown for all of us. We be at home with the family. We can enjoy, we can have fun with the family, right? And then, of course, attend all the school classes. Thank you. Thank you, ma'am. We have Bhumi Gogna now. Good morning, ma'am. Hi, good morning. Good morning, ma'am. How are you, ma'am? I'm fine, dear. I'm perfectly all right. I miss you, ma'am. We also miss you. We miss you a lot. All teachers miss the students. Ma'am. Yes, Bhumi. Thank you, Bhumi. There is a crack in your mic, I suppose, bete. Thank you so much. Thank you, Bhumi's mama, also for being there and giving your precious time. I now invite Krishna. Yes, ma'am. Do you want to ask anything, bete? You have raised hand. All right, thank you. I now invite Anmol Preet Kaur. Anmol Preet, are you unable to unmute your mic, bete? All right, we go in sequence. We now invite Arpan Bharti, please. Arpan Bharti. Good morning, ma'am. Uncle, नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Children, you have to wait for your turn. Arpan Bharti was invited. Arpan, is your papa also there with you? No, ma'am. All right, bete. You want to say something? Hello. Our teacher and principal, ma'am, too much. Thank you. Thank you. We all love you a lot too. Thank you so much, Arpan. May we have Diljit Singh, please? Good morning, ma'am. Myself is Diljit Singh. I read in second class. I love my school. I like in study. I like in activity classes. But my favorite class is English class. My motor class is very interesting. I miss my school and my teachers. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. I love listening to you and we all miss you too. And I'm glad you like your English class. Keep it up. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, mommy. Thank you so much. We have Tejas Kumar who has raised his hand, please.
Ma'am has given us precious time of hers. If we have any specific questions, we may go ahead. Parents, you are most welcome to share your thoughts, please. Ma'am, can Tejas, Anmol, you have been able to unmute your mic. Yes, bete, go ahead. Yes, ma'am. Now I am able to unmute my mic. Okay, you can share, please. Hello, ma'am. I am Anmol Kaur. I read in second A. I am very happy that you come in our class. Thank you, ma'am. Thank you, Anmol. Even I'm very, very happy to join all of you. I'm feeling very good about it. God bless you. Thank you, ma'am. Tejas, can you unmute your mic, dear? Tejas Kumar, are you able to unmute your mic? Yes, ma'am. Good morning, Yes. ma'am. Good morning. Ma'am, good morning, ma'am. My name is Tejas Kumar. Good morning. My name is Tejasu. I am 6 years old. Adi in second A. My school name is Kamala Nehru Public School. I love to meet you, ma'am. Thank you. Yeah, thank you, Tejas, for speaking. And even I would love to meet all of you. We still have to wait. We don't know how much. We have to wait. Thank you, Tejas. So Tejas is the new student who has joined this year. So this is the first time he's seeing Principal Ma'am. Thank you so much, children. Someone's mic is still on unmute. Keep a check, please. Thank you, Tejas. So I would again like to reiterate that if we have any specific questions, we may go ahead and ask, please. If you have any questions, you may mention in the chat window also, because I see lots of children have raised their hands, and I understand you all are wishing ma'am and you want to specially thank ma'am for being there in our class, isn't it? And I understand you have been participating in your monitors nominations for being selected as your monitors. Okay, so I would request you all to make it crisp and quick for ma'am as well, children. Okay, I now invite Manjot Singh, please. Okay, ma'am. Good morning, Principal ma'am. My name is Manjot Singh. I am studying second B. I miss you, ma'am, Principal ma'am, and teachers, and I miss my school. I enjoy the remote learning classes, activity classes, and well-being calls. I enjoy all sessions. And my favorite subject is all periods. My favorite subject. Thank you. That's lovely. I'm so happy. I'm so happy to listen to you. I'm so happy to listen to you. Uh, it's so nice that you are here and you like all your sessions. You have been sitting quietly and you're so well behaved when I look at you through the camera here. Manjot, God bless you and do everything possible so that you become, the best. You're already good. You become the best. You're wonderful. You listen to everybody. I like your thumbs up also. Keep it up. God bless you, dear. Thank you, ma'am. Manjot is one of those who have attended each and every session of well-being and all the studies and all the activities in the last academic session. So Okay, this 100% time, attendance? yes, ma'am. Okay. So we need to look into it and we should give him a special certificate for always attending all the classes. Please, you connect again and let's present him a certificate. We can prepare an e-certificate and you can give it in one of the classes. Okay? Sure, ma'am. God bless. Definitely. God So bless. children
Thank you, ma'am. Who all want to say thank you to ma'am, and who all want to say that we all miss the classes? Let us get some smileys from them on the chat. Let us see Excuse how me, many ma'am. smileys are coming up on the screen. Okay, 10. I can count 7, 8, 12, 13, right? Okay, 27. Ma'am, Okay, great. 43. I am unable to count. No, I cannot count them. So, so many children are missing school. Okay. And who all want to say that, ma'am, we all love you? Let me see some hearts on the screen. Who all want to say that, ma'am, we love you? Let's put some hearts on the screen. I think it's more than 50 now. Oh, is it 70? Is it 90? Oh. I forgot the counting. It was so quick. I missed them. ma'am. That's great. And who all loved listening to ma'am? Who all loved listening to ma'am? Let us give some claps. Just your mics on the mute. Reactions are very, very important. Mics on the mute. Who all loved listening to ma'am? Show us some claps. Wow. The claps are not ending at all. It should not end as well. Come on, children. Very, very good. That's how we express our gratitude towards our respected ma'am. Thank you so much. Thank you. Excuse me, ma'am. Ma'am wants to say something. Just a minute, please. I think there's a parent next to Tej Pratap Singh. आप Yes, मदर Tej बैठी Pratap. हुई हैं? या योर मदर इज देयर? कौन सी मदर साथ में बैठी हैं, कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज गो अहेड एंड स्पीक. आई कैन सी यू ऑन माय स्क्रीन. Hi, good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग डियर. Thank you very much for organizing this session and inviting all of us. It's a pleasure for us, for parents, to be here. And Tej Pratap is new to the school and he attends all the classes. When he misses the classes, he puts all the blame on me that you did not make me to sit for the classes. That's why I missed it. So it's your mistake, not mine. And he thoroughly enjoys all the classes, and we are happy to see that in a span of I think a few weeks he has improved so much. Earlier, I used to see that he won't be so interested to go for classes. Now he wakes up on time. He wakes up by saying, "Is it the time for class? Is it the time for class? Is it time? Is it still not time?" And he's up 6 or 6:30. And last night he woke up suddenly at 10 p.m. and asked me, "I want to do my EVS homework." And we are quite shocked to see that suddenly he's so interested in his studies and he enjoys all the classes. So I'm really grateful to all the teachers who are putting so much of efforts in their classes that students do in these pandemic times, in these tough times. They are able to attend classes. They are curious to attend classes and they feel enjoyed. They enjoy their classes a lot. So thank you very much. Thank you, ma'am. It's so nice to hear all these lovely words. And Tej Pratap, I am delighted to see you in your red t-shirt. I'm so happy to look at you. I'm so happy you get up early in the morning to attend the classes. I'm so happy that you're concerned and you could just get up at 10 and say, I want to do my homework. You're really very responsible student. I'm so happy you love every class. This would be a beautiful journey, we assure you that. And then the teachers are wonderful. They're very, very hardworking and they're very, very caring. Thank you, Tej Pratap, for joining Kamala Nehru Public School. We are delighted to have you in this family. For that reason, I'm delighted to have each and every child who's there present to be in Kamala Nehru Public School. You're very, very dear to all of us. We love you and we like you a lot. You're our children. We are proud of you. We know all of you are studying very hard. We know that you all are working, you're attending the classes, you're participating, you're doing everything possible, participating in all competitions and activities and enjoying all your classes. That's what we are supposed to do. You just have one job and that job is to study. That job is to enjoy. That job is to have fun. All right. So make sure you make the best use of this remote learning classes. Our classes are the best in the city. Our school is talked about when it comes to remote learning and when it comes to the way we are teaching. It would be so nice if you can show our school video also, Sharda. If you can look into that aspect, it'd be nice.
अपना वीडियो है, अपनी क्लासेस, अपने वैरेंडास, अपने स्कूल के वैरेंडा में जाएंगे, बसेस देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, अच्छा लगेगा. These are memories. You can always start. When you start, we can always be, I can leave it over to you then. So thank you everybody. Yeah. Thank you so much, ma'am. We are trying to play the video. We have Neil and Naksh's mother who wanted to address or thank. Yes, ma'am. May we invite you, please? Yes. Please go ahead. Thank you, ma'am. Neil and Naksh ke mama, please, if you can switch on your camera and mic. Yes, good morning, ma'am. Sharda ma'am and principal ma'am. Good morning, dear. Good morning. हाँ जी मैम, रिमोट लर्निंग ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਮ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ. ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. थैंक यू सो मच. ये फैक्ट है कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए आईटी बहुत पसंद है उनको, और आईटी ही कल है. टुमारो इज ऑल आईटी, द फ्यूचर इज ऑल आईटी. हमें ये ध्यान रखना है कि हम दुनिया से हटके कभी अपनी जिंदगी नहीं जी सकते. हम ये नहीं कह सकते कि हम तो ऐसा ही रहेंगे, दुनिया बदलती है तो बदल जाए. Change is what is permanent and change is what we have to go for. हमें बदलना चाहिए, हमारे बच्चों को बदलना चाहिए. और कोई challenges आते हैं तो स्कूल है आपके साथ. कुछ भी प्रॉब्लम किसी किस्म की आती है तो हम लोग सब हैं, हम उस प्रॉब्लम को हल करेंगे मिलजुल के. So rest assured, this would be again a beautiful year of learning, a beautiful experience for the children. बस एक ही रिक्वेस्ट है to children and parents, हिम्मत नहीं हारनी है. कई बार निराश होंगे, माहौल ऐसा है, लेकिन एक दूसरे की हौसला अफजाई करते रहना है. आप वेलबींग में टीचर से बात करिए. तो बच्चों से तो बात करनी होती है, पर टीचर से पेरेंट्स भी बात कर सकते हैं. कुछ भी प्रॉब्लम होती है, चैलेंज होती है, स्कूल क्या कर सकता है, कहाँ खड़ा हो सकता है आपके साथ. वी ऑल देयर इन दिस जर्नी टुगेदर एंड वी ऑल हियर टू सपोर्ट ईच अदर. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. आपको पिछले साल की रिमोट लर्निंग अच्छी लगी, वादा है इस साल उससे भी अच्छी होगी. इस साल तो हमें बहुत ज्यादा कुछ पता है पहले से. Thank you, ma'am. And we have our school video here, please. जो लोग कहते हैं कि घर बैठे दुनिया नहीं बदल सकते, वो अभी तक मिसेस परमजीत ढिल्लों से नहीं मिले. फगवाड़ा के चक हकीम गांव में कमला नेहरू पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस ढिल्लों. जब दुनिया बदल ही गई तो फिर वो बैठ जाती क्या? नहीं, 2 कदम आगे रहना तो फितरत है उनकी. इसलिए जब बाकी शहरों में अनऑफिशियल छुट्टियां मना रहे थे सब, केएनपीएस में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी थी. देखते ही देखते छोटे से इस एक गांव में आसपास के 65 गांव से 1600 बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली. अब ये कमाल कैसे हुआ? आइए मिसेस ढिल्लों से ही पूछते हैं. एजुकेशन किसी के लिए रुक तो नहीं सकती ना. दिसंबर में जब हमने दुनिया की शक्ल बदलते देखा तो हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी. फिर वो चाहे टीचर्स ट्रेनिंग हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे मॉक सेशंस हो, मोमेंटम बना रहे, इसलिए हमने गर्मी की छुट्टियां भी नहीं करी. आज के इस दौर में हम पीछे तो नहीं रह सकते. वक्त के साथ साथ ही चलना है, चाहे सब कुछ बदलना पड़े. चाहे 7 घंटे की जगह अब दिन के 10 से 12 घंटे लगे, या नई टेक्नोलॉजी से दोस्ती करनी पड़े. नोटबुक्स की जगह अब क्लासेस में ऑनलाइन पोल्स और एमसीक्यूज लेने पड़े. ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तब डिस्कशन, हंसी मजाक सब कुछ होता है, बहुत मजा आता है. और फिर जब सारा काम होकर एक जगह अपलोड हो जाता है तो सबको प्रोग्रेस भी दिख जाता है. 4 दिन का काम 1 दिन में खत्म और फिर खूब सारी मस्ती. और देखो हमारी टीचर्स भी कम कहा, अलग अलग बच्चों के लिए भी असाइनमेंट्स ऐसे बनाए
जिससे हर बच्चे को मौका मिले अपना हुनर दिखाने का अपनी अपनी वर्चुअल नोटबुक्स में। एक नई दुनिया से नए नॉर्मल तक, नई तकनीक से नए रिश्तों तक। अब अगर कोई पूछे कि घर बैठे दुनिया बदलते देखी है, तो हम कहेंगे हमने ही तो बदली है। So our school story is popular not only in India, it is in different countries. अपना स्कूल आईटी में इतना एक्सपर्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट के कमला नेहरू पब्लिक स्कूल इज द ब्रांड एम्बेसडर। वो हमारे इस वीडियो को बहुत सारे स्कूलों में दिखाते हैं और बहुत सारे मुल्कों में भी दिखाते हैं कि एक विलेज में स्कूल है जिसके बच्चों ने इतनी जल्दी सब कुछ सीख लिया और अडॉप्ट कर लिया रिमोट लर्निंग, और पेरेंट्स ने भी कोऑपरेट किया, टीचर्स ने भी अपने आप को अपग्रेड किया और बहुत बेहतरीन रिमोट लर्निंग क्लासेस हो रही हैं। So hearts of hearts, I'm thankful to every teacher, every student, every parent of this school. और सबसे बड़ा थैंक्स तो हम मालिक को करते हैं, ईश्वर को करते हैं, टू लॉर्ड ऑलमाइटी, टू वाहिगुरु, टू ईश्वर, एवरीबडी वी थैंक्स सो दैट यू नो दिस कंटिन्यूस। ये स्कूल की जो में जो पढ़ाई हो रही है, जो बच्चों का देख रेख हो रही है, जो दिल लगा हुआ है, ये सब लगा रहे और हम लोग पढ़ते रहें और एक साल फिर यूं ही बीत जाए और हमें पता भी ना चले। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलके। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you for those inspiring words. And yes, we do really feel every time we see the video as if we are there themselves. And definitely, we all can write our comments, thoughts, share our feelings in the chat window also. It's 11 o'clock and 16 minutes. Thank you so much for sparing your precious time, ma'am. And thank you. So you want some together mode or some pictures with some V sign or some happy sign? So please, we go for it. Otherwise, I call it a day and I would be taking break. Definitely, we would love to have those pictures at our end, ma'am. Wonderful drawings I'm seeing of SDG 8 and all. So children, you all can switch on your cameras. I'm going to the together mode. Request all the class teachers present here and parents as well.